Five. Five animals. Five animals. Madam, like dinosaur. These kind of talents lie inside all of us. Whether it's doing a painting or trying to sing or trying to find an outlet that's within the range of human creativity. Noman has always had a love for painting. लेकिन मुझे पेंटिंग का शौक बहुत ज़्यादा है, इसलिए कभी-कभी मैं पेंटिंग कर लेता हूँ जब टाइम मिलता है. But for him, painting is much more than just a hobby. Noman is schizophrenic, and this is one way for him to soothe his tortured mind. He arrives at this institution at 9 every morning for his therapy sessions and spends leisurely hours filled with music, games, and above all, art. मुझे जब भी कोई टाइम मिलता है तो मैं पेंटिंग कर लेता हूँ, ड्राइंग वगैरह बना लेता हूँ. अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ और साथ में दवाई भी खाता रहता हूँ, तो मुझे बेहतर महसूस हो. जब ये लोग इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आते हैं तो उनका थोड़ा सा इमोशनल कैथारसिस भी होता है. सुकून महसूस होता है और दिल को राहत होती है. Noman has spent years in fearful confusion, unable to distinguish between reality and the visions and voices in his mind. Art helps channel his energy, focus his thoughts, and most of all, feel a sense of achievement. ये सारे किसान हैं और इन किसानों के वजह से ये फसलें वगैरह निकल आई. किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी की वो चेहरा नहीं है. कोई मायने देना चाहेंगे इसे? कोई नाम ये अपनी अम्मा को याद कर रहा है. वेरी मीनिंगफुल. आप इसको क्या मायने देंगे? She is your memory. Okay. In a life of distorted perceptions of reality, art gives patients like Noman the chance to perceive what they see in whatever way they choose. ये ढांचा है जो कि एक ही टांग नहीं है. डायनासोर. इसमें डायनासोर कौन सा है? इसमें डायनासोर लाइक सर ये फर्स्ट वाला डायनासोर से. There's no wrong answer. Noman's early years gave no indication of the challenges that lay ahead. स्कूल में पढ़ाई सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर मेरे आते थे. ए ग्रेड था. मेरी वालदा खुद टीचर थी. When Noman was in his early 20s, his parents died, and he turned to heavy drug use soon after. His mind eventually gave way, and his life has never been the same since. Patients of mental illness suffer a number of related problems that destroy their social interaction, self-confidence, and learning abilities. अब एक आदमी 10 साल तक अगर बीमार रहता है तो 10 साल तक उसकी नश्व नुमा रुक गई. तो इस चीज़ को सही करने के लिए उसके इलाज में उन सारे पहलुओं को तवज्जो देना पड़ती है, जिसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं. तो जब मरीज़ को आप इंटेंसिव थेरेपी करते हैं, ग्रुप थेरेपी कर रहे हैं, उसको बीमारी का बता रहे हैं, उसके रिश्तेदारों से उसको मिला रहे हैं, उसको बिहेवियर को बता रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो साथ में उसको ऐसी भी चीज़ें चाहिए जहाँ वो बिल्कुल रिलैक्स महसूस करे, गाना गाए, इंजॉय करे, खुश हो. There are a total of 3,000 patients registered with this institution, of whom 80% receive medical and rehabilitative care free of cost. Several among them are residents here, such as Sajida, who is also suffering from schizophrenia. एक साल से ये धागा लपेट के मंगाया से बस काम करने. At the time she was brought here from the ED center, Sajida was manifesting severe symptoms of mental illness. इनको डिल्यूजन्स होते थे, थॉट डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम थी. इनके साथ बहुत सारे उस वक्त इश्यूज थे. इवन कि ये एक सिंपल टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाती थी. अब ये इतनी स्टेबल हो चुकी हैं कि ये अपने रोज़मर्रा के काम तकरीबन खुद अंजाम दे सकती हैं. A single mother, Sajida has 2 children and comes from a large family. Although she hasn't met any of them since almost a year, she continues to write to them regularly. आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बात पर गौर करेंगी. मेरी तबीयत बात वक्त ख़राब हो जाती है. अपने बच्चों को ये बहुत मिस करती हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं. आपको बच्चे याद आते हैं?
हाँ भाई मैं पहले अपने बच्चों को घर ले लाऊं। Meanwhile, Sajida focuses her mind on a range of activities every day. Aside from group therapy sessions, or mehfils as she likes to call them, she plays board games and stitches an assortment of items, such as this cap, which she's fashioning out of bits of plastic. Much of the creative work done by patients like Sajida and NOMAN is sold in exhibitions organized by this institution, adding further to their sense of self-worth. There are few institutions that provide the comprehensive treatment for complex mental problems as they do over here. Patients like NOMAN and Sajida may never be fully cured of their illness. But over here, they're given the opportunity to interact, relax, and learn. And above all, to be themselves. With cameraman Irshad Hussain, this is Sharbanu Sayyed reporting for Geo English, Karachi.